हाउ मेटल रिएक्ट्स विद डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड। अब डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड से मेटल की क्या अभिक्रिया होती है, कौन कौन से मेटल्स रिएक्ट करते हैं, इसके बारे में हम अब आगे कुछ चर्चा करेंगे। अब आप देखिए, डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड से अभिकृत होने वाले जो रिएक्शंस हैं उसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट कंसिडरेशंस हैं। हमें विशेष प्रकार से इन बातों पर ध्यान देना पड़ेगा। कंसंट्रेशन ऑफ नाइट्रिक एसिड, the specific products and their amounts will depend on the concentration of nitric acid used. जो नाइट्रिक एसिड यूज कर रहे हैं उसका कंसंट्रेशन कितना है इस पर निर्भर करता है कि क्या प्रोडक्ट बनेगा और कौन से गैसेस बनेंगी। More concentrated nitric acid will lead to a greater oxidation of metal and more or different nitrogen oxide production. तो इन प्रिंसिपल सिद्धांत के अनुसार अगर देखा जाए तो नाइट्रिक एसिड की अभिक्रिया मेटल से उसके सांद्रण पर निर्भर करती है। नाइट्रिक एसिड ऑक्सीकृत हो जाता है, अपचयित हो जाता है और रिड्यूस हो जाता है, और साथ ही साथ जो मेटल है उसके सॉल्ट्स बनते हैं ऑक्सीडेशन के अनुसार, और नाइट्रिक ऑक्साइड या नाइट्रस ऑक्साइड वगैरह प्राप्त होते हैं। तो अब आइए एक एक अभिक्रिया को हम विभिन्न पदों में समझें, तो इससे हमें विभिन्न अभिक्रियाओं को समझने में आसान हो जाएगा। नाइट्रिक एसिड रिएक्ट्स विद डिफरेंट टाइप ऑफ नाइट्रिक एसिड, डिफरेंट मेटल्स एंड इवन नॉन मेटल्स, और ये अभिक्रिया इस प्रकार से है। रिएक्शन विद वेरी डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड, वेरी डाइल्यूट मीन्स a concentration of about nearly 5 to 10%। अगर ये वेरी डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड है मतलब जल की अधिकता है, और नाइट्रिक एसिड तो उसमें एसिड के रूप में है, सोल्यूशन है, देन इट द प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड इज एमोनिया। और बेसिक रिएक्शन यहाँ पर इस प्रकार से दिया जा सकता है कि HNO3 gets reduced and forms ammonia। कौन कौन से मेटल्स इससे रिएक्ट करेंगे? दे आर जिंक, टिन एंड आयरन। तो हम विद्यार्थियों से या आपसे निवेदन करेंगे कि आप इस पर ध्यान दें कि वेरी डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड से एमोनिया बनेगा, और कौन कौन से रिएक्शंस पॉसिबल हैं मेटल्स से, वो है जिंक, टिन एंड आयरन। नाउ एमोनिया इन प्रेजेंस ऑफ नाइट्रिक एसिड कैनॉट रिमेन एज एमोनिया गैस, इट फॉर्म्स एमोनियम नाइट्रेट। तो अब देखिए एग्जाम्पल के रूप में अगर हम देखें तो जिंक विद नाइट्रिक एसिड रिएक्ट्स जिंक नाइट्रेट एंड हाइड्रोजन, नेसेंट हाइड्रोजन इज रिलीज्ड, और इसको बैलेंस करने के लिए हम 4 टाइम्स दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर सकते हैं, और नाइट्रिक एसिड gets reduced to form ammonia, that is what we have learned here in the first step। पहले इसके हम बता चुके हैं वेरी डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड से एमोनिया बनता है, बट दिस एमोनिया इन प्रेजेंस ऑफ नाइट्रिक एसिड इज कन्वर्टेड टू एमोनियम नाइट्रेट। तो इस प्रकार से अभिक्रिया 3 पदों में हो रही है, स्टेप 1, 2 एंड 3। अब इसको अगर हम ऐड अप करें और मल्टीप्लाई करें बैलेंस करने के लिए, तो फर्स्ट स्टेप को हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, बोथ द साइड्स ऑफ कोर्स, एंड देन इफ यू ऐड अप you get certain common products which appear on the reactant side and also the product side. They would cancel, and the final equation would be 4Zn plus 10 HNO3 giving out zinc nitrate, ammonium nitrate and water। अब आपको विशेष रूप से ध्यान देना है कि एमोनियम नाइट्रेट भी नाइट्रिक एसिड और मेटल की अभिक्रिया से बनता है, लेकिन कौन सा मेटल? वेरी डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड। Now let us take up the other reaction, reaction with tin। वो भी इसी प्रकार से है, इस पर ध्यान दें और इसकी प्रैक्टिस करें तो बहुत ही सरल हो जाएगा। अब आप देखिए, reaction of iron with nitric acid, it forms FeNO3 twice, of course very dilute nitric acid again, then you get ammonium nitrate, and finally you get FeNO3 twice। FeNO3 twice is ferrous nitrate, it's not ferric nitrate, and of course ammonium nitrate is there। तो वेरी डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड से एमोनियम नाइट्रेट बनता है प्रोडक्ट के रूप में, और सॉल्ट जो मेटल है उसका नाइट्रेट बन जाता है। दैट्स द मेन आउटकम।
Now let us take up another case, and the case is about reaction with dilute nitric acid, means more than 10%. Then the product obtained is either nitrous oxide N2O. N2O is nitrous oxide. And then how this is obtained, the related equation is that nitric acid 2HNO3 gets reduced to form N2O, and of course water is formed. Now here for zinc, the reaction is given here. The main metal which reacts are zinc and copper. For zinc, it is 2HNO3 plus 8H is equal to N2O plus 5H2O. And for copper, the reaction is written like as 2HNO3 giving out nitrous oxide plus 4H2O plus 4 atoms of oxygen, nascent oxygen. And then if you take up the examples of zinc with nitric acid, dilute nitric acid, of course, we are talking about dilute nitric acid. The final equation can be written this way using stepwise reactions. अब ये stepwise reactions आपको ध्यान देना होगा और किस प्रकार से हम बैलेंस करते हैं ये तो हमको मालूम है ही. And we get the reaction 4Zn plus 10HNO3, zinc nitrate, nitrous oxide, and water. Again, another example is there with copper, a similar example. And we can take up one more example further, and that is with 50% nitric acid. Nitric acid where the concentration of nitric acid is 50%, nearly 50%. Product mostly nitric oxide, NO, that is known as nitric oxide. It is formed, and the metals which react with 50% nitric acid are copper, zinc, mercury, silver, and an iron. And different reactions, nitric acid gets reduced as the first step through these typical reactions. And in general, you can say that the Me represents metal. Metal reacts with nitric acid, forms metallic nitrate, nitric oxide, and water. So looking to all these conditions, we can write stepwise reaction for different metals. With zinc, here is the final step, a final product, and of course the steps are shown here. Similarly, we can write stepwise reaction for mercury and nitric acid, 50% again. And here silver with nitric acid, same way it is iron and bismuth which also reacts, and you get ferric nitrate, FeNO3 thrice, that is ferric nitrate, and nitric oxide is obtained as a gas product, nitrogen gas, and water, of course, when we balance it, you get water. So this is how the metals react with dilute nitric acid, and the product depend upon the concentration of nitric acid. It may be very dilute nitric acid, it may be dilute nitric acid, or it may be 50% nitric acid. Of course, the product depends upon these concentrations, and not only the concentration, the other factors are also there, that is such as application of heat or the environmental effect may also affect the production of the product depending upon the situation. So that's there. We shall be back again with more details about the reaction of nitric acid with concentrated nitric acid and different metals. So thank you very much. Please do subscribe to our channel.